So good evening and welcome. I welcome all the guests and the regular participants for the Wednesday meet. So this is Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet. And today, Wednesday session, and the topic is balance, virtues and vices. So that's what we are looking at. Welcome, VP Singh ji. Yes. So when you hear this session, what is coming to your mind? Balance, virtues and vices. So let us first understand the whole concept of what is virtue and what is a vice. We all know that, right? तो वर्च्यूज को क्या बोलेंगे हम? वर्च्यूज को क्या बोलेंगे? Bookish definition will also work and experiential definition will also work. So what is a virtue? A good trait, a good quality, a good sanskar which moves you forward in your spiritual journey. Is that a good definition? Yes. So it could be a quality, it could be a trait, it could be a sanskar which will take you forward on your spiritual journey. That is a virtue. And accordingly, the vice will be something of the same sort, but it is stopping your progress in the spiritual journey. That's what I would say. So it is basically like a speed breaker. वो आपकी spiritual journey को रोकता है और आपको थोड़ा पीछे धकेलता है. Just like if you're driving and if you get a speed breaker, what happens? You slow down or it pulls you back. Correct? So that is the understanding of a vice. So now let us look at what does the topic say. Your topic says how to balance your virtues and vices. So what do you understand by this? How do you balance your virtues and vices? Anybody? It's an open discussion. Anybody can share. So balancing virtues and vices means what? The human being has both the qualities, right? दोनों संस्कार हमारे अंदर ही है ना. अच्छे संस्कार, बुरे संस्कार, जो आपके स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाते हैं वो वर्च्यूज हैं, जो आगे बढ़ने से रोकते हैं वो वाइसेस हैं. तो इन दोनों को बैलेंस करने का मतलब क्या हुआ? जैसे तराजू है, तराजू में अगर एक छोर जो है बिल्कुल ही अगर भारी हो जाते तो क्या होता है? It is totally in disbalance. So what do? You put weight on the other one so that it comes back into the balance. Correct? So exactly the same way your life has to perform. And obviously जो हमारे चेक पॉइंट है वो ये है कि हमारे वाइसेस कितने एक्टिव हैं हमारी लाइफ में. फर्स्ट वी बिकम अवेयर ऑफ दैट एंड देन वी बैलेंस इट by putting the focus on the virtues. So that is the basically technique of balancing, I would say, right? So anybody who wants to share? Yes, Anirudh, go ahead. ये जो अभी आपने बताया कि तराजू है, अगर वर्च्यू ज्यादा हो जाए तो वाइस कम करने हैं, अगर वर्च्यू कम हो तो वाइस ज्यादा करने पड़ेंगे, क्या है मतलब? वो तो एक तरीके अगर वाइस ज्यादा है तो वर्च्यू कम है तो वर्च्यू को बढ़ाना पड़ेगा. अगर वर्च्यू ज्यादा हो गए तो वाइस को भी बढ़ाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए. अगर वर्च्यूज ज्यादा हैं और आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, स्पिरिचुअल जर्नी अच्छी चल रही है, तो चलने दो ना. हमको बैलेंस तो नेगेटिव को करना है ना. बैलेंस तो नेगेटिव को करना है ना. हाँ, तो तराजू नहीं है, तराजू से वो कंफ्यूज हो गया. हाँ, ठीक है. तराजू का मतलब सिर्फ ये है कि इफ योर लाइफ इज टोटली आउट ऑफ बैलेंस, आउट ऑफ हार्मनी, अगर लाइफ आउट ऑफ हार्मनी है तो उसको बैलेंस करने के लिए यू विल हैव टू फोकस ऑन योर वर्च्यूज सो दैट योर लाइफ इज इन बैलेंस. पहले से वर्च्यूज ज्यादा हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना. तब तो यू आर लाइक अ किंग. तराजू के ठीक है सर, ठीक है, ओके, आई गेट दैट पॉइंट. तो maybe the explanation or the reference of taraju was not completely appropriate, right? For complete understanding. But अगर लाइफ टोटली आउट ऑफ बैलेंस है, आउट ऑफ हार्मनी है, तो वाइसेस ज्यादा हैं, तो हमको वाइसेस पे फोकस ना करके वर्च्यूज पे फोकस करना. दैट वाज द मैसेज. करेक्ट? यस. फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताता हूँ. आपके सबके घर में गार्डन होंगे, सबके घर में पौधे होंगे. हाँ, आजकल सारे पौधे रखते हैं. तो अगर एक रोज का प्लांट है और एक कैक्टस का प्लांट है, ओके, नाउ ऑब्वियसली आई डोंट वांट कैक्टस, आई वांट टू फोकस ऑन रोजेस. तो मैं क्या करूंगा?
मैं रोज के पौधे को नर्चर करूंगा, पानी दूंगा, आई विल इंश्योर दैट इट इज प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ। नर्चर रोज को करूंगा मैं। और अगर कैक्टस को मैं ध्यान नहीं दूंगा तो क्या होगा, धीरे धीरे कैक्टस विल स्टॉप ग्रोइंग इन माई गार्डन। कंपेयर दीस एज वर्च्यूज एंड वाइसेस, राइट। तो मेरे को वाइस पे फोकस नहीं करना है, फोकस मेरे को वर्च्यूज पे करना है, सो दैट दैट विल फोकस, दैट विल ग्रो एंड इट विल ब्रिंग बैलेंस इन माई लाइफ। वैसे भी हम बोलते हैं ना, कलयुग है तो वाइसेस आर डोमिनेटिंग। हमारे जो तामसिक या राजसिक संस्कार हैं, हाँ, जो हमारे विकार भी हम बोलते हैं, तो बहुत बार बोल चुका हूँ। तो जो 6 मेजर हैं हमारे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये वाइसेस हैं। यस, वी कैन कंसिडर देम एज वाइसेस। और अगर ये बढ़ गए हैं, इनका वेटेज ज़्यादा हो गया है, तो इनके ऊपर फोकस ना करके व्हाट डू, वी फोकस ऑन 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 द वर्च्यूज। वर्च्यूज क्या है हमारे? सतोगुनी आत्मा के सतोगुनी संस्कार। तो वी टॉक ऑफ लव, पीस, प्योरिटी, हैप्पीनेस, जॉय, सर्विस, कंट्रीब्यूशन, फ्रीडम। तो इन पे फोकस करें, ऑटोमेटिकली लाइफ बैलेंस में आ जाएगी और आगे बढ़ने लगेगी। दैट इज अंडरस्टैंडिंग। तो अनिरुद्ध जी, आई होप आई एम क्लियर। तराजू को यस। भूल जाइए, नहीं नहीं, तराजू ठीक को है भूल सर। जाइए। हाँ, ठीक है। नहीं, अच्छा हुआ आपने बोल दिया, काफी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अगर वर्च्यूज बढ़ गए हैं तो क्या वाइसेस को भी बढ़ा के बैलेंस करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी जर्नी बहुत अच्छी जा रही है, तो पर मेजॉरिटी का परसेंटेज वाइसेस का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कलयुग का है। हाँ, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कलयुग का है, लेकिन उस कलयुग में भी हम सतोगुनी आत्मा बन के जी सकते हैं। सो आवर वर्च्यू शुड बी हायर देन द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ कलयुग। मेकिंग सेंस एवरीबडी? सो नाउ लेट अस डू सम इंट्रोस्पेक्शन। ज्ञान, ज्ञान बहुत हो गया, इतना सही ज्ञान है। हमारे लाइफ में क्या डोमिनेटिंग है? वी हैव टू लुक एट दैट। हमारी लाइफ में क्या डोमिनेटिंग है अभी? इज इट virtues or is it vices? That will be the message for today. So let us look into our life. अपनी लाइफ में देखिए, vices dominating हैं और you are fairly happy with the quality of life with your virtues. What is dominating? किसका पलड़ा भारी है? virtues का भारी है तो शेयर करिए so that you can motivate others. और अगर vices ज़्यादा हैं तो let us have some sharing and let us see how we can balance that. That will be the message for today. Yes, now over to you. कौन शेयर करना चाहेंगे? Maybe if nobody Yeah, is talking, maybe I can share. yeah, even otherwise you can share. Go ahead. No, I think so. Virtues and vices. I think I did not have even the clarity till about, let's say, 6, 7 years back, till about 2018 and 19. And when the spiritual journey started to see the qualities were differently apart from each other. So I think it is okay to be able to not spot very clear differences between the virtue and vices to begin with. But the very intention to begin with, for example, this session is probably making us think into a direction that there is a way to look at this, and there is a possibility to physically to see these virtues and vices separately, and in this journey start taking decision from the willpower of feel. I think free will is the right word, and then pick virtues and not vices. So it sounds very tough that how is it possible technically that I can just pick up, but it is possible. Continue to just be open to this inquiry, and God and universe will start giving you or start putting you in the path where you can start to figure out differences. And it's okay at any spiritual coordinates we are at any point of time. So just be open to the development. Absolutely. Perfect. Perfect, Amit. So introspection is the first step. Awareness, coming into awareness of your virtues and vices is the first step. Right? Very good. But yeah, let's acknowledge Amit. Thank you. Very good, Thank powerful you. sharing. All of you teach me with your presence. Yeah.
So let us look into some practicality of life, right? Hmm. Now there is Mr. X. Mr. X is normally a confused person, you can say, right? कोई भी option दे दो, lot of analysis is going on. ये करूं या वो करूं, ये करना चाहिए. एक डिसीजन ले लिया कि हाँ मेरे को अब बिजनेस करना चाहिए, मेरे को जॉब छोड़ देनी चाहिए, and I want to do business, and he's thinking of a lot of business prospects and all that, and suddenly somebody comes and tells him, "Arey, this is not the right time to do business. Focus, security, अपनी जॉब में रहो." Now he is thinking, हाँ ये बात तो सही है, बिजनेस में बहुत नुकसान होता है, बहुत ही अनसर्टेनिटी है, let me focus on my job. Then he thinks, wow, यहाँ पे तो I'm working for somebody else, boss is always scolding me, मेरे को कोई freedom नहीं है, I am getting constrained, I have to do business. So vacillating समझते हैं, माइंड इधर जा रहा है फिर उधर जा रहा है, इट्स लाइक ए पेंडुलम. पहले जॉब करना है, फिर बिजनेस करना है, फिर जॉब करना है, बिजनेस करना है. इन द प्रोसेस व्हाट इज हैपनिंग? लॉट ऑफ losing peace of mind, no decision making, confused mind. How many of us have faced this situation or similar situation in any aspect? होता है confusion. Confusion means what? Confusion means what? No clarity. क्या करना है, clarity नहीं है. Pros and cons weigh कर रहे हो, analysis कर रहे हो, लेकिन कोई decision making नहीं हो रहा है. Correct? Now is this can we say this is some kind of a confusion is not a good state, right? Like Arjuna in the battlefield confused. Confused में inaction होगा, कोई action नहीं ले पाएंगे. इसी स्टेट में अगर वर्च्यू को फोकस करना है तो क्या होगा? डिसीजन मेकिंग. Any person who can take a quick decision, quick analysis and a quick decision will always have a lot of clarity in his mind and will be free from confusion. Yes or no? तो अगर कोई कंफ्यूज स्टेट से बाहर निकलना चाह रहा है, फोकस ऑन डिसीजन मेकिंग एबिलिटी. अपने इंटेलेक्ट को स्ट्रांग बनाना है, डिसीजन मेकिंग को स्ट्रांग बनाना है. इट विल गिव यू लॉट ऑफ क्लैरिटी एंड पीस ऑफ माइंड. इज दैट एग्जांपल गुड इनफ? So a vice can be balanced by the virtue of powerful decision making, effective decision making. Correct? Let's take another example. Somebody is experiencing a lot of fear. Fear of insecurity, maybe fear of rejection. And fear is something which is common to all human beings, right? All of us have fears at some point of time. Some fears or the other. Yes or no? Yes. So how do you balance fear? Fear of obviously bhai hai. Bhai means what? Vice hai. तो वाइस को बैलेंस करने के लिए वर्च्यू चाहिए. कौन सी वर्च्यू लाएंगे? फेयर को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए होता है? टेल मी. Love. Courage. Okay. Love. Right. But in spirituality we choose one particular word which is very close to both these, but it is not neither. Courage in some action. Courage in action. Action. Action तो courage में आ गया ना. courage के साथ action लेना है. वो तो fear को डर के आगे जीते बोलते हैं ना. That is fine. So that is one aspect. Courage is one aspect. Love is another. If you are full of fear, you have to replace that with love. Love will dissolve fear. Very good. Another close thing. दोनों ठीक है वैसे, different situations में. अगर किसी एक्शन से डर लग रहा है, hold on, one at a time. Okay. कौन बोल रहे हैं? ट्रस्ट. गुंजर. Yeah. ओके. तो अगर फियर है तो ट्रस्ट कैसे करोगे? किस पे ट्रस्ट करोगे? Divine, of course. डिवाइन पे. वेरी गुड. इट इज कॉल्ड फेथ. इट्स नॉट कॉल्ड ट्रस्ट. वेरी गुड. वंडरफुल. दैट वाज द आंसर आई वाज लुकिंग एट. थैंक यू गुंजन. Thank you so much. Gunjan ji has said faith. Okay. So faith. अगर किसी चीज में fear है, please go on mute if there is a disturbance. I can't keep on putting all of you on mute. Yeah. Okay. So if you are experiencing fear, what is the solution to that? Complete surrender to the divine and have faith. Faith in the divine will remove all the fear. एक ही जना है ना जिसके ऊपर भरोसा करो तो डर खत्म हो सकता है. You have to invoke the divine in you or simply have faith in the divine. Yes, how many of you agree? If it is fear of taking
action which is bringing you into inaction, then courage is the answer. Courage के साथ आगे बढ़ जाओ, डर के आगे जीत है, सुना होगा, right? And if there is some fear of emotion, fear of rejection, fear of failure, in that case what Amit ji said, love is a panacea. We say love is a cure all for all negative emotions. So love is a perfect virtue. So all these different aspects of virtues can help you in a particular situation. कौन सा apply करेंगे वो आपके ऊपर depend करता है. Yes Devesh ji, you have raised your hand, please go ahead. I had to mute you. Sir, what's about the knowledge? हाँ, Fear, knowledge fear को नहीं remove करता है. ज्ञान, yes, wisdom, knowledge नहीं, wisdom. Wisdom, yes. The right understanding Knowledge can or remove all the wisdom, fears, because most of the fears are illusionary. Exactly. So right wisdom, right understanding can remove the fear. Yes, absolutely perfect, very good, बहुत बढ़िया. So प्रॉब्लम जो मर्जी हो, आपको एक ना एक वर्च्यू आपकी लाइफ में मिल जाएगा जो उसको बैलेंस कर सकता है. How many of you are clear now? We have seen 4 virtues for one common vice of fear. Yes. So pick up something else in your life and share. मैंने कुछ examples दे दिए. Maybe confusion to decision making, fear to faith or love or courage or wisdom. Pick up something else. Anger. Maybe patience. Patience Patience किस लिए? for virtue. कौन से वाइस को हटाने के लिए? Fear के लिए? की energies. No, not. Yeah, fear के लिए भी आप पेशेंस होनी चाहिए इंसान में, मेरे को नहीं पता. हाँ, पेशेंस होनी चाहिए अगर डेस्परेशन और फ्रस्ट्रेशन हो लाइफ में तो, है ना? हाँ जी. अगर फ्रस्ट्रेशन है, डेस्परेशन है, मेरे को रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे, मेरे को आज रिजल्ट चाहिए, क्यों नहीं मिल रहे, एंजाइटी में हो, वरी में हो, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, डेस्परेशन हो रहा है, देन पेशेंस इज ए गुड वर्च्यू. लर्न टू बी पेशेंट, क्योंकि बीज को पेड़ बनने में टाइम लगेगा. टेक द राइट एक्शंस एंड हैव पेशेंस. कीप फेथ इन द डिवाइन, हैव होप. बोलते ना, फेथ, होप एंड पेशेंस is the key. Yes, it's a very powerful virtue. Very good. Right? So you have to see in your life what has worked for you. सबकी लाइफ में अलग अलग होगा, इसीलिए फेयर के लिए बहुत लोगों ने अलग अलग दिया, क्योंकि उनकी लाइफ में वो एप्लीकेबल था. Yes. So look into your life and share कौन सा वाइस आपकी लाइफ में आया और कैसे आपने बैलेंस किया. And I'm sure all of you must have done it. Welcome प्रीति जी. नमस्कार, welcome. Yes, let's take another vice जो हमने बात करी, एंगर. तो से एंगर इज द वाइस. अब एंगर पे फोकस करोगे तो कैक्टस पे फोकस करने के बराबर है. तो एंगर पे फोकस नहीं करना. किस पे फोकस करोगे अगर आपको एंगर को बैलेंस करना है अपनी लाइफ में? किस चीज पे फोकस करोगे? विच वर्च्यू विल हेल्प यू और विच हैज हेल्प्ड यू? टेल मी दैट. विच हैज हेल्प्ड यू इन योर लाइफ? Yeah, peace. Peace. Very good, powerful. So instead of saying I'm not angry, what do you say? I am peaceful. So chant the peace mantra and the anger will come down. Very good, very powerful, Jyoti ji. बढ़िया. Knowledge, Jyoti ji. In my life I have experienced understanding in anger. Okay. Anger, understanding. So can we say compassion? Yeah. Compassion? Yeah, maybe. Yeah, maybe. Showing compassion to the other person and understanding why is the second person angry. Second person is not angry. You are angry. Yeah. Okay. उसके एंगर को अंडरस्टैंड कर रहे हो तो बात समझ में आ रही. सर हार्मनी. Harmony. Okay, very good. So peace and harmony. Perfect. That is the way to handle your anger. उसको कम करने के लिए. Yes, Devi ji, go ahead. Love is a strong emotion to counter this one, sir. Love for anger. किसी पे गुस्सा आ Because रहा है, love के अचानक साथ उस पे आपके पास patience भी आता है. हाँ, बिल्कुल सही है. It's absolutely perfect. But if you want to control your anger, what will you invoke? The best which has worked in your life. If it is love, perfect, absolutely fine. Love is the strongest emotion that we are
bound to feel in many Yeah. life situations. Correct? Very good. बहुत बढ़िया. अगर आपके लिए लव काम करता है, अगर आपने उसको अपनी हाँ, अगर लव को आपने इम्प्लांट कर लिया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती हैं। उसके साथ आपके पास पेशेंस भी आता है, सॉफ्ट स्पोकन भी आता है। यू लर्न हाउ टू बिहेव, यू लर्न हाउ टू स्पीक पोलाइटली, एंड बहुत सारे ट्रेड्स ऑटोमेटिकली आते हैं। very good. तो आई बढ़िया. थिंक So it has worked for बहुत you? बड़ा सॉल्यूशन है। It यस has worked in your life? यस यस। Very good. Wonderful. Let's acknowledge Devishi. So anger can be neutralized or balanced by love, peace, compassion. Anger can also be compensated or neutralized by forgiveness. Yeah, forgiveness is a big thing. So instead of blaming somebody, किसी को कोस रहे हो, किसी को गालियां दे रहे हो, किसी को अपनी लाइफ के लिए, बर्बादी के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हो, so how do you overcome that? Being responsible for your life and forgiving people. Focus on that, your blame will go. तो ब्लेम करना, चुगली करना सब बंद हो जाएगा. चुगली करने में बड़ा मजा आता है वैसे. यू ब्लेम पीपल, इट्स वेरी वेरी एंटरटेनिंग इवेंट. किसी को बुरा भला को एक की चुगली दूसरे से सर करो. निंदा सुख, निंदा सुख, हाँ, क्या बोल रहे हैं? सर निंदा सुख बोलते हैं इसे, निंदा सुख. निंदा सुख बोलते हैं सर इसे. Okay. So yeah, so that is all related to triggering your negative emotions more. और वॉइस को इकट्ठा करने का तरीका है. You are spreading negativity around. So best way to avoid that is what? निंदा सुख. हाँ, so अगर उसको कम करना है तो क्या करेंगे? Forgive. Stop gossip. कितने लोग गॉसिप करते हैं? मजा आता है. Stop gossip. कोई हाथ खड़ा नहीं कर रहा है. Everybody loves gossip. Let me tell you that. बड़ा मजा आता है गालियां देने में, गॉसिप करने में, चुगली करने में. हाँ, सर बट इट इज आता है, ऑल औरतों नेगेटिविटी. का जन्म सिद्ध अधिकार है. हाँ, तो इसीलिए जन्म से ही नेगेटिव होते हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, कोई जन्म से अधिकार नहीं है. लव, पीस एंड जॉय इज योर बर्थ राइट. ये जन्म से अधिकार हैं आपके, ये जन्म से आपके संस्कार हैं. इनको इन्वोक करो, चुगली करना बंद कर दोगे. एंड दिस इज फॉर वेरी क्लोज टू ऑफ माई फ्रेंड्स, हाँ, जो चुगली करने में एक्सपर्ट हैं. And of course, at some point of time, I I was one of want to them. say something. Yes, Jyoti ji, go ahead. जैसे ना कभी किसी से बात हो रही है और किसी की कोई बात बुरी लग जाती है, तो 2 मिनट के लिए मन करता है कि इससे बात ही ना की जाए. तब तभी तुरंत ध्यान आता है, क्योंकि जब से स्पिरिचुअल जर्नी आपके साथ शुरू हुई है, ये वाली वैदिक हीलिंग की, कि अगर मैं इसके लिए कुछ बुरा सोचूंगी या कुछ होंगी तो मेरा कर्म बन जाएगा, अगले जन्म में भी मुझे वो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा. तो इमीडिएटली आई फॉरगिव दैट पर्सन एंड यू नो and come at peace. Absolutely. The moment you forgive somebody, you will be at peace. उसको छोड़ो, उसका क्या होगा बस बात की बात है. You become peaceful. So that is very very powerful, right? तो ब्लेम नहीं करना है, किसी को ब्लेम नहीं करना है, किसी की चुगली नहीं करनी है, गॉसिप नहीं करना है, and start giving blessings. It is the easiest thing to do. लोग कहते चुगली कैसे बंद कर दें? हाँ, जैसे अभी गुंजन जी बोल रही थी, जन्म से अधिकार है लेडीज का. Stop talking these language. Blessings देना is the natural way of living. Start blessing people. Bless them with love, peace and joy instead of gossiping. Okay, of course I know it was said in a lighter vein, but message is loud and clear. Yes, let's acknowledge everybody who shared. And yes, Anirudh ji, you wanted to share something? Go ahead. बस यही कहना था कि जो भी वाइस हैं, जैसे आपने बताया एंगर है, ग्रीड है, या ईगो है, या कुछ सभी ये वाइस हैं, तो ये मेरे ख्याल में इसका हर एक को खुद, वो जो जैसे अभी बात अमित जी ने भी बोला कि अवेयरनेस, कि इसको हमें अवेयर करना पड़ेगा, इसका सोर्स क्या है. हर एक का सोर्स अलग अलग हो सकता है, और वंस वी फाइंड द सोर्स ऑफ द वाइस एंड देन रिमूव इट. सर, वाइस को ढूंढने की जगह पे वर्च्यू को फोकस करें, यही मैं बताना चाह रहा हूँ. नहीं, वर्चू तो कर रहे हैं. पहले जो भी वाइस है उसका सोर्स, एंगर क्यों आ रहा है, ग्रीड क्यों आ रही है, तो उसको
मेरे ख्याल में उस पर उसको जो भी उसका रीजन है, हर एक के लिए रीजन थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, बिल्कुल होगा। तो है ना, बिल्कुल होगा। तो अपना जो रीजन ढूंढकर उसको आप फिर ट्राई करो कि वो रीजन जो है वो खत्म कर दो, तो वो वर्च्यू से ही आएगा। कौन सी वर्च्यू चाहिए, तो वाइस के लिए वर्च्यू भी सबका अलग अलग होगा, मेरा ये कहना है। तो एब्सोल्युटली, जो वर्च्यू खुद ही, ये खुद ही अवेयर करना पड़ेगा, खुद ही ढूंढना पड़ेगा हर एक। एब्सोल्युटली, परफेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। क्योंकि ये सारे संस्कार आपके अंदर ही हैं। ऐसा इसमें नहीं है कि इसमें सर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हाँ जी, मेरा पॉइंट ऑफ हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सिर्फ अंधेरे के चक्कर में पड़ेंगे। कई बार कुछ चीजें इसलिए एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि उजाला नहीं है, उनका वास्तव में देखा उसका अस्तित्व ही नहीं है, तो उनकी अननेसेसरी एनालिसिस का कोई फायदा नहीं है। तो मैंने देखा अंधेरे के इलाज की जगह उजाले के इलाज जो आप कह रहे हो, इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन द वाइस, वर्क ऑन द वर्च्यू, वाइसेस अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। ओवर टू यू सर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली परफेक्ट सर, बढ़िया। ठीक लेट्स है, एक्नॉलेज ओके। वीपी सिंह जी। राइट, वही मैंने कहा ना, कैक्टस की जड़ पे जाने की जगह अच्छा है आप गुलाब को फोकस करें। जिस पे फोकस नहीं करेंगे वो अपने आप खत्म हो जाएगा लाइफ। ओनली दैट थिंग विल फ्लरिश इन योर लाइफ ऑन विच यू फोकस। बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज एंड रिजल्ट्स फॉलो। दिस इज द लॉ ऑफ सीक्रेट, करेक्ट। वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज एंड रिजल्ट्स फॉलो। कैक्टस पे फोकस करोगे, वाइसेस पे फोकस करोगे, वो बढ़ेंगे आपके। तो उनके एनालिसिस मत करो। बेस्ट तरीका क्या है, वर्च्यूज को ढूंढो, और वो आपके अंदर हैं। आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये सब संस्कार आपके अंदर ऑलरेडी हैं। यू आर ए सतोगुणी आत्मा, यू हैव सतोगुणी संस्कार। तो लव, पीस, पावर, प्योरिटी, डिविनिटी, हैप्पीनेस, ब्लिस, विजडम, पावर, फॉरगिवनेस, कंपैशन, ये सब आपके अंदर है। उसका कौन सा फ्लेवर सबसे ज्यादा आपको आपके फ्रीक्वेंसी में है, उसको आप नर्चर करो। इसीलिए हर एक के अलग अलग हैं। जैसे अभी अनुरुचि जी ने कहा, हर एक के वर्च्यूज का अपना अलग अलग फ्लेवर है। हर एक को चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खानी है, किसी को स्ट्रॉबेरी खानी है, किसी को वनीला खानी है। तो हर एक वर्च्यू का एक न एक क्वालिटी आपके अंदर प्रोमिनेंट होगा। उसको ढूंढो, उसको नर्चर करो। वॉइसेस अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। यस, लेट्स एक्नॉलेज एवरीबॉडी, वेरी गुड। यस, व्हाट इज ओपनिंग अप? कौन शेयर करना चाहेंगे? कौन से वॉइस हैं आपके जो अभी भी अगर हैं, और आप उसको उसके ऊपर काम करने के लिए कौन से वर्च्यू ढूंढेंगे? दैट विल बी मोर यू कैन से लाइवली फॉर यू, दैट विल बी रियली रियली रियल फॉर यू। कौन बोलना चाहेंगे? अपनी लाइफ में से कोई एक, प्रेजेंट लाइफ में ढूंढिए कौन से वॉइस आपके डोमिनेटिंग हैं। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या बैलेंस करने के लिए कौन से वर्च्यू आप ढूंढेंगे जो अभी तक है आपकी लाइफ में, या आप कर कैन चुके हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन बी कॉल्ड अ वाइस? यस, ऑफ कोर्स। आज करे सो काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है भैया, जब जीना है बरसों। प्रोक्रेस्टिनेशन, आज का काम कल पे डाल दो। ये बहुत बड़ा वाइस है जी, ये तो। बहुत बड़ा है जी, काम होगा ही नहीं। टोटल काम इनएक्शन, होगा ही टोटल लेजीनेस, नहीं। कामचोर। हाँ। तो क्या करने का तरीका है इसका? वर्च्यू क्या है इसकी? वर्च्यू क्या है बताइए। ज्योति जी ने बहुत बढ़िया एक वाइस Will power, दिखा दिया। will power विल to पावर, take an यस। action. एंड विल पावर के साथ एक्शन लेके क्या करना है? तो obviously laziness चली जाएगी सर अपने आप ही। एक्शन, बी इन एक्शन राइट हाँ जी, नाउ। yeah, राइट right now नाउ, only. लाइफ इज हैपनिंग Yeah, राइट नाउ। जोर से ताली बजाओ yeah, और बोलो that's what लाइफ I इज हैपनिंग। meant to say. होल्ड ऑन गुंजन जी, जोर से ताली बजा के बोलो लाइफ इज हैपनिंग राइट नाउ, राइट नाउ, Right now. राइट नाउ। Yeah. ये है लाइफ। जो करना है अभी करना है। प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म, एनर्जी आ जाएगी, उठो कूदो और जाओ, वॉक पे जाओ, मॉर्निंग वॉक पे जाओ, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, जो करना है करो राइट नाउ। दैट्स हाउ यू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन, वेरी सिंपल। कितने लोगों को क्लियर हुआ? जंप आउट ऑफ द सीट राइट नाउ एंड डू इट। कल के लिए कुछ नहीं छोड़ना, अभी करना है जो करना है। आज रात को सोओगे, कल नहीं उठोगे तो क्या होगा फिर?
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कल रात को सोए थे, आज नहीं उठे. वी आर लकी, सो वी थैंक गॉड, एंड देन वी गेट इनटू एक्शन. यस. तो ज्योति जी, आपको जवाब मिला. जी जी. जो काम करने से मन नहीं मान रहा है उसको बोलो राइट नाउ. एक ही मैजिक मंत्र है इसका. आज करूंगी, अभी करूंगी. ओके. करेक्ट. ओके, वेरी गुड. लेट्स एक्नॉलेज ज्योति जी एंड ऑल्सो गुंजन जी. गुंजन जी कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने आपको बीच में रोक दिया. यू कैन गो अहेड. But even I have to take an action right now because I have guests at home, so I am leaving the conversation in between. Yeah. So whatever you need to do right now. Yeah, Correct? right now That only. is how you need Thank to do you. it. Not, don't postpone it. Yeah, thank you so much. Thank you, Yes. all of you. Yeah, bye-bye. Yes. Take care. Bye. Take care. Bye-bye. ये तो गलती इंटरप्रिटेशन ले लिया एक्शन का. हाँ? कोई बात नहीं. Sorry. It's okay. We understand. Life happens Yeah, to you thank right you now. so much, sir. Thank you. Life happens to you right now, Yeah. and you have to take action right now. Go ahead. Okay, let's Yeah, acknowledge बच्चे हैं everybody. तो खाना देना है अभी. Okay, let's acknowledge. Okay. Yeah, bye-bye. Thank you Thank so you. much. Bye. Bye. Take care. Yes. Moving on. Let's have some more people share. क्या निकल के आ रहा है? How is vices and virtues treating you in life? Let me put it that way. Are you entertaining as a good host? Are you entertaining guests like Gunjan ji is doing now? Are you entertaining virtues or are you entertaining vices? किसको entertain कर रहे हो? Let's look at that. चौबीस घंटे की लाइफ को एनालाइज करिए अपने. आज का दिन तो अभी बुरा नहीं हुआ, तो चलो कल का दिन ले लेते हैं, या आज ही का दिन ले लो, सुबह से लेके अब तक क्या डोमिनेटिंग था आपकी लाइफ में? लव, पीस, जॉय, ये सब था, या वरी, एंजाइटी, फियर, टेंशन, फाइट्स, आउटबर्स्ट्स, गाली गलौच? आई होप किसी ने हाथ नहीं उठाया होगा, बट इन केस अगर लड़ाई झगड़ा हो गया, हाथ भी उठाया है, तो वो भी आपका वायलेंस, हिंसा, टोटल वाइस है. यस. हाउ डू यू बैलेंस दैट? So look into your life, see what voice was dominating you, and then see how you're going to balance it. That will make it more real. किसी कली के साथ झगड़ा हुआ, किसी की बात पे आप नाराज हो गए, दुखी हो गए, परेशान हो गए, हर्ट हो गए, या आपसे कोई गलती हो गई, आप गिल्ट में हो, ब्लेम में हो, रिग्रेट हो रहा है, अपनी किसी एक्शन पे रिग्रेट हो रहा है, ये सब वाइसेस हैं. Never encourage any negative emotion, negative thought. But if it comes, recognize it, acknowledge it, and neutralize it with a virtue. So let's have some more people share. सुशील जैन जी, किशोर जी, निवेदिता जी, कौन शेयर करना चाहेंगे? Let me welcome more people. नेक इंसान 9999. Okay. नेक इंसान जी, if you're there. किशोर जी, if you're there, if you want to introduce yourself, please go ahead. Kumar Tresham ji, welcome. Alok ji, welcome. Vaishali Gandhi ji, welcome. Yes, in case you want to share something about yourself, and if you're coming here for the first time, I'll request you to leave your message leave your contact detail in the chat box so that we can send you the recordings tomorrow. Yes. Anybody else who wants to share? क्या हो गया आज कोई शेयरिंग वाले मूड में नहीं है? Maybe then I can share it. No. Yes, go ahead. I have discussed this with you. One of the ways to be able to very clearly differentiate between these two and pick the virtue and not vice. So it just happened that the visual happened in front of me, and I think it gave me a lot of clarity to see these two differently and then pick only the virtue and not vice. So, for example, when we
when we have various thoughts in the mind in response to any situation in life, we have two situations, either let's say to take the anger route or to take the smarter route. Now, smarter would also include other things, but angry one is very simple instantly. Likewise, in any situation, there could be two options that you will always have. One option could be indicating towards vice, the other option could be indicating towards virtue. And it is technically, spiritually, scientifically possible to pick up the vice and not virtue. For example, now this visual helped me to understand it very clearly, a lot more profoundly. Just imagine yourself when let's say we were traveling in an aircraft, we come down to the airport, and then at the conveyor belt, we wait for our luggage to come. You know, that conveyor belt, wo gol gol ghumte hain, and the luggage is on the belt. And there are hundreds and dozens of baggages that we see. But we know which one is going to be our bag. There is a physical smartness in this process that, come what may, you will be able to pick up your single bag out of the crowd of, let's say, 50s and 100s. The very simple way you can pick up your bag, because your mind knows how to pick up what you want. Very same way, it is also possible from the soul's perspective to pick up the virtue, like a uthaya, snapped, and then move on. It is technically possible. If some people have done it, then all of us has this innate, infinite consciousness, which is equal in everybody. We just don't switch on that button. This is one thing which is common. We can be different in terms of beauty, looks, and also the IQ. But I think that consciousness, which is hidden, is equal. So I think if somebody could do this to pick up a virtue, like in this example, all of us, all 8.13 billion people largely can do it till the time. Yeah. I think this is one thing which I wanted to share, possible to pick up these two separate. Absolutely perfect. Very good. बहुत बढ़िया, Amit ji. And that is where we talk of consciousness or awareness and the free will and the decision making. So all these will come into the I think picture. I discussed with you. So this was some visual which happened, and then also. Absolutely perfect. Very good. बहुत बढ़िया. Let's listen to what Devesh ji has to say, and then Anirudh ji. Yeah, Devesh ji, go ahead. Thank you. Is it Hello. my internet or? No, it is Shashi. It It's is my Shashi's internet, I think. It's showing By the slightly way, it unstable. was lovely example. It's a lovely. Yeah, wonderful, wonderful, Amit ji. Correct. Now, And the yeah, visual of conveyor belt is very, very profound. Yes. Okay, Very good Devesh ji, you example. wanted to share something? Are you there? सर, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि आज का टॉपिक वर्च्यूज एंड वाइसेस है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम लोग इमोशंस में ड्रिवन रहते हैं, तो हम लोग जो वाइसेस के जो पैटर्न्स हैं वो उसको एनालाइज नहीं कर पाते, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर अनेबल टू डू द इंट्रोस्पेक्शन कि हम किस वाइसेस के थ्रू अभी ऑपरेट हो रहे हैं। तो क्या कोई पैटर्न है इन जो ट्रेट्स हैं, जो वाइसेस हैं, उसके कोई पैटर्न्स हैं जिनको कि हम डिस्कस कर सकें नेक्स्ट सेशन में? दैट इज माय Why next session? We have been talking of that in all the sessions. So आपके voices normally कौन से हैं? Human being के voices कौन से होते हैं? कौन से विकार हैं हमारे? आप जानते हो? Guilt, shame, jealousy, मद, मोह, और माया। हर एक का थोड़ा थोड़ा वेरिएशन डिफरेंट होगा, हर एक के लेवल में उसकी इंटेंसिटी डिफरेंट होगी, बट बेसिक विकार तो सारी सेम है ना। काम, डिजायर्स, अटैचमेंट टू द डिजायर्स, राइट? राग द्वेष वहीं से आ जाएगा। क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईगो, मत्सर, हेट्रेड, इसी के वेरिएशंस है ना सब कुछ। भय, राग, द्वेष, ये हैं आपके विकार, यही हैं आपके वाइसेस। तो अब आपको थोड़ी सी अवेयरनेस अगर होगी और थोड़ा सा अगर फ्री विल एंड डिसीजन मेकिंग पावर होगी, तो यू विल इमीडिएटली सी दैट एंड से ओके दिस इज द थिंग। बट इफ यू ऑलरेडी आर प्रोसेस्ड इन योर माइंड, जैसे अमित जी ने अभी कहा कि मेरा बैग ये है, मेरे को ये उठाना है, तो आपको मालूम है मेरे को अगर गुस्सा आ रहा है, मेरे को फट से पीस को नर्चर करना है। एग्जैक्टली। मेरा तो बहुत फेवरेट है, my basic panic or anxiety or fear, I used to always go back and say Om Shanti, peaceful soul, Om Shanti, I'm a peaceful soul, Om Shanti, I'm a peaceful soul, and all my negative emotions will simply fall back. So you have to
ड्रॉ ए क्विक फिक्स फॉर यू योरसेल्फ. एक मंत्र आपका रेडी होना चाहिए. एंड मेरे लिए ओम शांति वर्क्स परफेक्टली वेल. राइट? आई एम ए पीसफुल सोल. ओम शांति. आई एम ए लवफुल सोल. आई एम ए पावरफुल सोल. ओम शक्ति. लाइक दैट. तो आपको अपने छोटे छोटे, जैसे हम शॉर्ट्स बोलते हैं आजकल, हाँ, वीडियो में, यूट्यूब में वीडियो शॉर्ट्स डालते हैं, रील्स डालते हैं, वैसे ही है. छोटा सा एक मंत्र का एक बीज मंत्र पकड़ लो. That will act like a virtue and it will neutralize all the negative emotions and all the negative traits that can come up. Right, Deveshi? I hope I am made myself clear. Right, sir, right. Perfect. Let's acknowledge you, Yes, Deveshi. sir. Very good. Thank you, sir. Very good question actually and good analysis. तो ज़्यादा एनालाइज नहीं करना, सिर्फ रिकग्नाइज करना है, एनालाइज नहीं करना. रूट कॉज पे मत जाओ. नेगेटिविटी के रूट कॉज में जाओगे, कीचड़ के अंदर घुस के निकालने के बराबर है. मत जाओ. कीचड़ में क्यों घुसना है? कीचड़ है, दिख गया, जैसे ही पाँव आने जाने लगा, पाँव खींच लो वापस और दूसरे रास्ते से निकल जाओ. दूसरा रास्ता क्या है? वर्च्यूज का रास्ता है. करेक्ट. वेरी गुड. अनिरुद्ध जी, आपने हाथ खड़ा किया था. यू वांट टू से समथिंग? सर मैं 2 मिनट लेता हूँ. मैं इसके लिए ये अभी वाइस और वर्चूज के बारे में देख रहा था कि वाइस क्या है, वर्चूज क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई देम. तो वो वाइस जो मैंने इसको देखा कि वो है दोज हैबिट्स जो हमें अपने आप से और दूसरों से सेपरेट करती हैं. राइट. वो वाइसेस हैं. और वर्चूज जो हैं जो हमें अपने अंदर से और दूसरों से ज्वाइन करती हैं, वो वर्चूज हैं. तो इसका ये है कि हमें वो काम करने हैं जो दूसरों से ज्वाइन करें और हम अपने अंदर से ज्वाइन करें डिवाइन को. वो काम करें तो अपने वाइसेस खत्म हो जाएंगे. बहुत बढ़िया. परफेक्ट. वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग एंड दैट इज द राइट पाथ एक्चुअली. यू कैन डू उसमें दैट विद फिर ये ज्ञान ईगो, योग. हाँ जी, या यू कैन तो डू ये दैट विद वर्चूज ज्ञान जो योग. हैं, यू कैन डू दैट विद एनीथिंग. अब जैसे ईगो से जो है ये हमें दूसरे से अलग करती है, ग्रीड दूसरे से अलग करती है, एंगर दूसरे से अलग करता है. तो जो दूसरे से अलग करता है वो चीजें छोड़नी है. तो ये प्रॉब्लम थोड़ी इजी हो जाएगी सॉल्व करना. बिल्कुल सही है. तो जैसे ही आपको लगे कि आपके और दूसरे के बीच में एक दीवार खड़ी हो रही है, सो यू गो बैक टू द क्वालिटी विच विल यूनाइट बोथ ऑफ यू. हाँ, यस, लव, यूनाइट बोथ. लव, पीस, लव जॉय. लव है, कंपैशन है, ऑनेस्टी है. यस. परफेक्ट. वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग अनिरुद्ध जी. बहुत बढ़िया. ओके. यस. नेक इंसान जी, आप आए थे थोड़ी देर के लिए वीडियो पे. इफ यू वांट टू शेयर समथिंग प्लीज गो अहेड, अगर आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं. ओके. एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू शेयर? My net is showing slightly unstable, so I hope I am audible. Yeah. Okay, good. So now let us also, now everybody has understood basically what is virtue, what is the vice. So look into your life. That is the homework I would say. Look into your life and see what is dominating your life and see a way how you're going to operate on which virtue so that you can come out of it or stay clear from it. उसकी तरफ नहीं जाना. कीचड़ है तो कीचड़ के ऊपर से अंदर धंसना नहीं है, दलदल हो सकता है ना. तो उसके अंदर जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है. दलदल है तो फंस जाओगे. देख लिया, रियलाइज कर लिया, बाहर निकल जाओ. हाँ, इन ह्यूमरस वे इट इज सेड, केले का छिलका दिख गया तो फिसलना जरूरी नहीं है. अपने स्टेप्स को अलग करो और साइड से निकल जाओ. All right, very good. Anybody else who wants to share something? Otherwise, we move on to the next level now. Yeah, sir, I have a question that how Yes. मतलब आप जो सुनते हैं स्क्रिप्चर्स और ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, ये वाइसेस हैं. ये दिस इज एट दी आई मीन दी सोल लेवल और इमोशनल, बॉडी माइंड स्पिरिट की बात करते हैं. तो ये शायद स्पिरिट लेवल पे, जैसे विकार एक शरीर के विकार हैं कि किसी की मतलब आंखें कमजोर हो गए या बाल उड़ गए या मोटे हो गए, या ये विकार है बेसिकली. वाइस मतलब हम अगर वाइसेस और वर्च्यूज की कैटेगरी को उसको हम विकार और उसमें देखते हैं. तो सर ये आइडेंटिफाई कोई सरल तरीका है कि अपना ऑडिट, सेल्फ ऑडिट कैसे किया जाए? क्योंकि जैसे भय को अगर देखते हैं, अब भय तो इस एट टाइम्स आपको भय
तो एक पॉजिटिव भी तरीके से देखा जा सकता है भय को, कि आपको कोई किसी चीज का अगर भय होता है तो आप उस फियर की वजह से ही आप शायद अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो और सही रास्ते पे चलते हो। जैसे कानून का भय हो सकता है, समाज का भय हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो वो वहां पे थोड़ी शायद कंफ्यूजन है कि उसमें आप निदान करें। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स एक्नॉलेज नेक जी। नेक जी पहली बार आए हैं एंड ही हैज रेज ए वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। तो सबसे पहले ये समझना है सर कि शरीर के विकारों की हम बात नहीं कर रहे हैं। शरीर में जो तकलीफें आ रही हैं, शरीर में कोई बीमारी आ रही है, उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं जो विकार आपके चित्त में है, यानी कि जो संस्कार में, जो बीज रूप में आपके चित्त में है। बीज मीन्स एज ए सीड, करेक्ट। तो ये जो हमने अभी जितने भी जी संस्कार के नाम लिए जी हैं, जो भी विकारों के नाम लिए हैं, ये सब आपके चित्त में एम्बेडेड हैं, कई जन्मों से हैं। और जो सतोगुनी आत्मा के सतोगुनी संस्कार हैं, ये भी आपके चित्त में हैं। तो अगर कोई लाइफ सिचुएशन आती है तो कौन सा इमोशन या कौन से विकार एक्टिव हो रहे हैं आपके, आपको वो देखना है सबसे पहले। और ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपके आपके पड़ोसी से झगड़ा हो रहा है किसी भी बात पे, तो कौन सा विकार उत्पन्न हो रहा है? झगड़ा हो रहा है, कौन सा विकार आएगा आपका? विजुलाइज करिए, आप किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं, क्रोध आने की संभावना है, क्रोध, और तो क्रोध विकार आ गया ना। पिटी, अब इसमें कोई पिटी डाउट भी हो नहीं है। सकता है। हाँ, इसमें लड़ाई हो मतलब रही है ये सर, जी जी। सबसे ऑब्वियस इमोशन कौन सा है, सबसे ऑब्वियस विकार कौन सा है? क्रोध। क्रोध। 90% ऑफ द टाइम इट विल बी क्रोध, है ना? हम्म, करेक्ट। तो ये विकार आ गया। अब क्रोध को, जी। क्रोध पे काम ना करके, क्रोध अगर कम करना है, somebody से एंग्री यंग मैन और एंग्री ओल्ड मैन की अगर उसका पर्सनैलिटी है, उसको कम करना है तो क्या करना चाहिए? आपको क्रोध क्या का लगता है? क्षमा, क्षमा। क्षमा, वेरी गुड। तो फॉरगिवनेस आ गया आपके लिए। तो एंगर पे काम करने की जगह आपको फॉरगिवनेस पे कंपैशन, काम पिटी, करना है। पिटी, एक ले लीजिए, अभी कोई कोई भी मे ले बी लीजिए, अगर पिटी। जो आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली हुआ है या पॉसिबल है या आपको वो अट्रैक्ट करता है, वो क्वालिटी आप पकड़ेंगे ना। हर एक के मत सोचिए, अपना सोचिए। आपने कहा फॉरगिवनेस, क्षमा। तो अगर नहीं फॉरगिवनेस नहीं, है, मैं सर मैं हम्म, हाँ जी बोलिए। ये मतलब आई वॉज गोइंग थ्रू दिस, तो आई वॉज थिंकिंग कि विकार क्या है अपना? अहंकार, अगर मैं अहंकार एक विकार को मानता हूँ, तो वो कहता है कि यार मतलब विकार पर तो मनी है, लेकिन जैसे क्रोध है, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में तो आंसर इज दैट कि क्रोध आने की संभावना है। लेकिन अगर क्रोध आता ही नहीं है उस पर भी कि यू फील दैट क्षमा या पिटी या कंपैशन नजर आता है, या वो, क्योंकि व्हेन तो यू आर बहुत एट अ बढ़िया है ना स्पिरिचुअल सर, लेवल तो बहुत बढ़िया तो है ये सर। नहीं देन यू आता सर। फॉलो दैट, देन यू फॉलो दैट वर्च्यू ना, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। वाइस को, वाइस को एक्टिवेट मत करो, वर्च्यू को एक्टिवेट करो। तो फॉरगिवनेस में रहो। अगर उसको माफ करना है माफ करोगे, गलती उसकी है तो उसको माफ करोगे, आपकी गलती है तो आप माफी मांग लोगे। तो फॉरगिवनेस इज ए वर्च्यू विच विल हेल्प यू टू ओवरकम एनी काइंड ऑफ एंगर और अगली सिचुएशन विद द पीपल इन योर लाइफ। वो पड़ोसी हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, परिवार वाले हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मेकिंग सेंस? सो हाँ यू जी, हैव टू सी, हाँ जी। so you have to see what is the situation, what is the vice which is getting activated, and how do you neutralize that with a virtue. That is the discussion that we are having. हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये क्लैरिटी अगर है तो अपने डिफरेंट डिफरेंट लाइफ सिचुएशंस में आप देखिए, एंड देन यू मूव ऑन। दैट इज द वे टू मूव अहेड। परफेक्ट, वेरी गुड। लेट्स राइट सर। एक्नॉलेज नेक जी, बहुत बढ़िया। So that is how you, थैंक यू सर, everybody थैंक यू needs सो to मच। actually introspect and move on, right? Great. Now, having seen the balance between the virtues and vices, how many of you think that will bring balance and harmony in your life? How many of you think this is going to really, really be powerful way of living if you focus on the virtues and neutralize the vices? Correct? Everybody clear on this? This is powerful? Yes. So this is the introspection that we all need to do. Now we are coming to the close of the session. So I'll quickly touch one topic and then we move on to the closing. We often hear कि सर materialistic सॉरी, world में,
I'm interrupting once again. Yeah. Amit ji introduced me. We are from the same college, Hansraj College. Okay, And I very put good. endeavors to join a couple of my friends, and I think 2 friends have joined today. Wow. One is Kishore ji and one is Vaishali ji, and maybe Oh. Jyoti they also joined on my invitation. So, sir, this is just because I consider this is not the first time I'm attending. Yeah. This is my second time I'm there in the session. So, sir, I want कि जो नए members हैं उनका because they may be shy and they have not opened their camera, तो वो अपना one liner एक introduction परिचय दे देंगे तो I'm just making this submission. Wow. That's absolutely perfect, sir. I normally invite them to do that once or twice, but I leave it to them. Final decision is with them. है ना? So it's always better to have the video Kishore on. ji, Vaishali ji, and Jyoti ji, please, you may Jyoti open ji, your I mic think and just. is an old participant, but yeah, Kishore ji and Vaishali ji. All right. If you want to share something, you are welcome. I will wait for 5 or 10 seconds for you to start your introduction in case you want to. That's perfectly fine. Yeah. Yeah, we can Okay, start the. We will give them some time. If they're comfortable, they will do that. That's fine. But thank you, Right, Nick ji, right, sir. for not only attending the program, but also inviting you guests. Let's have a round of applause for Nick ji and of course Amit ji for inviting. Yes. Thank you. Yes, Amit ji, go So ahead. just one liner here. Yeah, one liner here. Mr. Kapil Mitra is his name. He is an established advocate. He has attended, I think, 2 sessions before, and from Hansraj also, if you remember now. So, right? अमित जी, वो नेक इंसान जो तखल्लुस है वो किसी पर्पस से है कि बिकॉज एक मूवमेंट हमने शुरू की हुई है तो उसमें बहुत सारे नेक इंसान हैं तो दैट वे इट वाज स्टार्टेड तो it will be long story. I'll share with you separately. Yeah, great. Thank you for joining and encouraging for अच्छा, others as well. ये कपिल जी हैं क्या जो पहले आए थे? कपिल मित्रा, yeah. ओ वही मैं कहूँ, मैंने कहा कपिल जी को तो मैं जानता हूँ, वो तो हमारे DHV ग्रुप में हैं. Okay, very good, Kapil ji. Thank you. But I heard नेक इंसान, मैंने कहा पहली बार आ रहे हैं, इसलिए मैंने guess समझा. We are That's all fine, gods. perfectly fine. Yes, all sir. right, let's acknowledge everybody. Thank you so much. All right, Thank good. you. Vande Mataram. Now we are coming to the end of the session, so I'll quickly take you to one of the events that is happening. So how many of you are aware that 8th March is a great day? Mahashivratri is there, and we have a special healing cycle for Mahashivratri, which is starting from 8th of March, and it will go for 21 days. All of you know that as a healer, we do healing cycle of 21 days. So this is a very, very special, very powerful and mind-blowing healing cycle that we are starting on 8th March. And I'll be doing that for all the healies. So those who are interested should get in touch with me. It's going to be very powerful. It will have the divine blessings of the Shiv and Shakti union, and it will be it can and it will create magic and miracles in your life. So that is one thing. So I will not take much time to do that. Posts are, I've already posted the details in the group. Those who are interested should get in touch with me, and we will start the healing from 8th of March. Okay. And that's fine. And the energy exchange is very, very nominal. It is 555 rupees if you have seen the post. So you should do that for all your family members. And that is per healy. Okay. So that is one. Also, this Mahashivratri on 8th March is not only Mahashivratri day, it is also International Women's Day. And Nari Ki Shakti is a big event. And to share more on this, I invite Sanjeev. Sanjeev has planned a big event on this day. So let's hear from Sanjeev what he has planned for us. Thank you, Shashi. This is just a simple line, like it's related to the topic today, vice and virtue. So I was thinking of this thing that one of the virtue in our society is that women are getting empowered. घर में बच्चियों को आजकल बचपन से सिखाया जाता है to be empowered and be independent. इस वर्च्यू के साथ एक वाइस खड़ा होता जा रहा है, और वो है कि बच्चियों को तो सिखाया जा रहा है कि आप इंडिपेंडेंट और एम्पावर्ड हो, बट बच्चों को नहीं सिखाया जा रहा है कि इंडिपेंडेंट और एम्पावर्ड वुमेन कैसे हैंडल करा जाता है. दो एनर्जी बहुत डिफरेंट तरीके से बैलेंस करनी बहुत जरूरी होती है. सो विद दिस नारी की शक्ति
तो कैसे हमें समझना है नारी की शक्ति। एंड इट्स नॉट अबाउट लेडीज, फेमिनिन एनर्जी हर इंसान के अंदर होती है, मैस्कुलिन एनर्जी हर इंसान के अंदर होती है। सो वी आर डूइंग अ ग्रेट इवेंट ऑन दिस डे एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नारी की शक्ति, फेमिनिन एनर्जी के ऊपर हम कैसे अपना आपको वर्क कर सकते हैं। दैट्स where we are doing a session on 8th of March morning 11 o'clock. फ्री सेशन है, नो एनर्जी एक्सचेंज। कोई देना चाहे तो ले लूंगा, दैट्स फाइन। बट ऑन अ लाइटर नोट, यस, मॉर्निंग 11 o'clock जूम पे है, लिंक डाल दिया है ग्रुप में। ज्वाइन एंड इनवाइट as much as possible so that we can actually interact. It's an interactive session, it's not a one-way session. Let's meet on 8th of March at 11 o'clock in the morning. Thank you very much. I'll be there. Perfect, perfect. Let's acknowledge Sanjeev. Wonderful event. Okay, I'm sure all of you would be very, very excited to attend that session, right? All right, good. So with this, we come to the end of the session and we are right on time. Unless anybody else has to share anything, कोई share करना चाहेंगे? Last and final call. Okay, so in that case, we come to the end of the session. Thank you very much for your participation, especially the guests who have come today. And I hope you got value for your time that you spent here. So get in touch with us and we will be sharing the recording. So we can get in touch with you and send you the recording if you share your contact details on the chat, right? So with this, we come to the end of the session. Thank you very much. We come back again next Wednesday with a lot more. And before that, of course, as the events we have mentioned, get in touch with us in case you are interested, or if you want to invite your friends to attend that. And we meet again next Wednesday. Till then, Aham Brahmasmi. Enjoy a great week. Enjoy a great life. Sure. Bye-bye. Aham Brahmasmi. Yes. Bye. Bye-bye.